This conference will now be recorded. Introduction of VDI and AVD. Both are different to each other. So let me guide you about what is VDI, and after that we'll proceed with the AVD, Azure Virtual Desktop. ठीक है? Okay, sir. So VDI की बात करें तो as per the name suggests, VDI is basically virtual desktop interface, right? Okay. And if we talk about virtual desktop interface, VDI setup के लिए अपने पास various method हैं. You can configure your VDI using Windows Server, like 2012, 16, 19, and 2022. Second, you can configure your VDI using Citrix. You can set up your VDI using VMware, Horizon, and you can set up your VMware virtualization using Microsoft Azure. These all are the platform that help us to set up our VDI solution. इनमें से Okay. कोई भी एक आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं टू कॉन्फ़िगर आवर वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस. Is it okay? Yeah. Okay, sir. Now, question how VDI can work, which is really important. Okay. ठीक है कि VDI काम कैसे करता है. इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी शुड नो अबाउट कि VDI काम कैसे करता है. वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस की टास्क की बात करें. कॉमन एग्जांपल है, जेनरिक एग्जांपल है. आई एम नॉट गोइंग टू चूज एनीवन. इन चारों में से किसी एक पर्टिकुलर का नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं. एक जेनरिक एग्जांपल देते हैं जो सभी टेक्नोलॉजी के साथ फिट बैठता है. फॉर एग्जांपल, यू इस्टेब्लिश वन सर्वर. ठीक है, ये आपने एक सर्वर इस्टेब्लिश किया. कोई भी सर्वर हो सकता है. इट मे बी विंडोज, VMware का होराइजन, या फिर सिट्रिक्स हो सकता है. ठीक है, या फिर आपने होस्ट पूल कॉन्फ़िगर कर रखा है. Okay. सर्वर या फिर हम यहाँ पे होस्ट मेंशन कर देते हैं. एंड वी हैव अ गुड कॉन्फ़िगरेशन, मींस इस सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ठीक ठाक है. Okay. नाउ इन सर्वर वी एस्टैब्लिश फ्यू वर्चुअल मशीन. यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ वर्चुअल मशीन इस सर्वर के अंदर एस्टैब्लिश कर रखा है. लाइक दिस ऑल आर द वर्चुअल मशीन्स. अब VDI क्या करता है ना, इसमें VDI की हेल्प से अपने पास नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं, दो है, राइट. दो वर्चुअल मशीन है. Yeah. Two virtual machines. अब वर्चुअल मशीन्स को यू वांटेड टू एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स. इन VM का जो एक्सेस है ना, RDP एक्सेस है, वो आप मल्टीपल इंस्टेंस से मल्टीपल यूजर के थ्रू करना चाहते हैं. यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4. ठीक है, you wanted to access the virtual machine from multiple user. आप एक की ही VM के मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो मान लीजिए दिस इज आवर वर्चुअल मशीन एंड सेम वर्चुअल मशीन एक्सेस बाय यूजर 1, same virtual machine accessed by user 2, and same virtual machine accessed by user 3. आप एक ही VM को तीन यूजर को असाइन कर रहे हो एट अ सेम टाइम. थिंक अबाउट इट. नॉर्मली ये पॉसिबल है क्या? No. आप इसको RDP भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप इनको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो.
You don't want to assign the you don't want to provide the यूजर्स आरडीपी, तो उस केस में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन असाइन कर दोगे कि द So, यूजर वन so what is नीड the टू meaning of RDP? आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, आरडीपी, Okay, क्लियर? okay, okay. Clear, sir. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडीआई, और वीडीआई सेटअप करने के लिए एज वी डिस्कस्ड वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। वीडीआई को सेटअप करने के लिए अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है। यू कैन प्रोसीड विद VMware, you can proceed with Horizon, या फिर Citrix पे जा सकते हैं। विंडोज सर्वर अपने पास अवेलेबल है, विंडोज एक सिंगल सर्वर अवेलेबल है, उससे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। या फिर आप पूरे के पूरे वर्चुअल इन्वायरमेंट पे मीन्स VMware के माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे भी अपना सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yeah, clear, sir. ठीक है, सो VDI इज द वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। नाउ अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज AVD, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है टू अंडरस्टैंड अबाउट द Azure Virtual Desktop, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ VDI। तो हमारा जो मोटो है वो है माइक्रोसॉफ्ट Azure, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है। एंड पहले इसी को WVD बोला जाता था, अब इसको AVD बोलते हैं, ठीक है ना। पहले इसी को हम Yeah, WVD के yeah. नाम से जानते हैं, Acha. विंडोज Okay, वर्चुअल डेस्कटॉप। Now it become AVD. okay. Now question, how we can use the Azure Virtual Desktop? It's our responsibility. We should know about the usage of Azure Virtual Desktop. So in case of Azure Virtual Desktop, lots of services are required. इसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है वो पहले हम गाइड कर देते हैं आपको। The prerequisite is Azure subscription. We must need to create our account over Azure portal. Azure subscription चाहिए। Identification of Azure, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ Azure पोर्टल। यू शुड नो अबाउट द सर्विस लोकेशन की कौन सी सर्विस कहाँ पे है। नंबर थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Azure VNet। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। वी जस्ट नीड टू Yes. नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ VNet एंड subnet. Number fourth, install Active Directory on Azure VM. Install ADDS on Azure Virtual Machine, ठीक है। हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, उस वर्चुअल मशीन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे। इज इट ओके? Yeah, okay, sir. So, what is फाइन। Active Directory? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जिसकी हेल्प से हम VDI को क्रिएट करेंगे। विदाउट AD वी डोंट हैव अ ऑप्शन टू क्रिएट द एक्टिव what we can say, we don't have option to configure Virtual. AVD, Okay, okay, ठीक है। बिना AD के आप कहीं पे भी, नॉट ओनली विद एज्योर, आप कहीं पे भी ना सेटअप नहीं कर पाएंगे VDI को। So it's okay, mandatory to configure the VDI. okay, sir. Now this is the important point। VNet के बाद हम इसमें तैयार करेंगे Azure Virtual Machine and install the Active Directory. Then create AD user। Active Directory के अंदर हम कुछ users create करेंगे। Then we'll set up AD synchronization to Azure AD, AD sync to Azure AD,
दो तरीके की एक्टिव डायरेक्टरी है। एक पैस सर्विस में काउंट होती है, एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होती है। तो जो हम वर्चुअल मशीन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, उनके यूजर्स को एडी के साथ सिंक्रोनाइज करना है। एंड देन नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर होस्ट पूल एंड मैनेज users for host pool. We'll discuss about the types of host pool और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये बेसिक के स्टेप्स है जो हमें Azure वर्चुअल डेस्कटॉप के क्रिएट करते समय हमें मालूम होनी चाहिए। तो Okay. आप एक बार गो थ्रू कर लो इसमें से एंड लेट मी नो, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सो नो वरी अबाउट इट, एडी वगैरह क्या है ये हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। Mm. इज इट ओके? So यहाँ what तक is, कोई क्वेश्चन? yeah, yeah, yeah. What is host pool, sir? होस्ट पूल इज अ बैकएंड सेटअप आप बोल सकते हो। बैकएंड में जब आप Azure पे वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं, तो बैकएंड में एक होस्ट रहता है जो कि वर्चुअल मशीन को कंटेन करेगा। Okay, okay, होस्ट मतलब जैसे ESXi होस्ट होता है, हाइपरवाइजर होस्ट mm, होता है, ओपन स्टैक mm, होस्ट होता है, वैसे यहाँ पे बैकएंड में एक होस्ट अवेलेबल रहता है okay, okay, sir. दैट वी कैन यूज टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन। अलग अलग VMs को तैयार करने के लिए होस्ट पूल की रिक्वायरमेंट होती है। So how much data we can provide up to, what is the, I mean, 64-bit or 34-bit like that? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ Yes, yeah, ऑपरेटिंग? yes, sir. We are able to configure 64-bit operating system, and 32-bit also supports. Okay. So maximum how much data for each VM machine we can give? It's depend upon you कि आप कौन सा कितना डेटा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। Generally, how much data MNC company By, will use a project by default, requires? by default, Azure will give you 128 GB, 127 GB, बट आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हो कभी भी। Oh, okay, sir. बाय डिफॉल्ट 127 जीबी का स्पेस आपको मिलता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग उस स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। So in the VM version, there by default we can give access for each and every application inside. Or is there any setup? Is there any kind of thing where we can stop the access, or we can until unless we get the request from the users? नो, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? Inside there will be access on off option will be there, yes, sir. टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन दैट यू क्रिएटेड? Yeah, yes, sir. Okay, so we have an option to access our virtual machine by using two different ways. One, you can take the RDP directly. It will give us a URL. Once you type the URL on browser, it will give you the access, user ID and password. And with the help of user ID and password, we are able to access virtual machine. दूसरा तरीका ये होता है कि we can set up our tool. We just need to install the tool in our base machine, and we are able to access through the built-in tool. Okay, clear, sir. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट द इंटायर पॉइंट, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Okay, okay, sir. Till here, clear, sir.
Okay, so let's proceed. Base से बिल्कुल start करना पड़ेगा because you should know about the Azure services and about the cloud services. So what is cloud computing? What do you think about the cloud computing? Where you can store data, company data, confidential data. Mm-hmm. We can uh, store the data in different locations. Even though one machine will destroy, we can retrieve the data from other machines. So safe, a kind of safe zone storage, any Only data. storage, or do we have any other option? Mm, only storage, sir. That's my knowledge. Actually, Azure will not only the Azure, every cloud provider can give us option to set up lots of services apart from instead of only storing data, you can create virtual machine, network, you can manage your VPN, you can set up your virtual machines, application services, databases, बहुत सारी services हम इस पे manage कर सकते हैं, not only the virtual machine. Okay, okay, sir. ठीक है ठीक है I'm going to start from the very basic that you can understand about the concept. ठीक है तो Okay, sir. वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा. Okay, sir. Okay, let's talk about the Azure services first, and after that we'll proceed for the creation, how we can create our account. Means Office 365 पे account create होना mandatory है. Okay, sir. And just need to proceed with create account on Azure portal. But before that, you should know about cloud computing, right? थोड़ा सा Yeah, क्लाउड yes. कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज Azure Virtual Desktop is also a type of cloud. Also a type of cloud because we are using the Azure portal. तो Azure भी एक cloud का types है तो you should know about the entire cloud. So basically to understand about the cloud computing which is categorized into different part like as kind of work based. In work based we will discuss about the infrastructure as a services, software as a services. I hope you heard about these options. एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. दूसरा ऑप्शन होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड. द क्लाउड कंप्यूटिंग categorized into different part. One is work based and second is technology based. The meaning of technology based like as a public cloud, second is private cloud, Good. and number third is a hybrid cloud. These three different types of cloud computing are available, and some people also consider as a multi cloud. ठीक है. सो मल्टी क्लाउड क्या होता है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है कि आप एज्योर भी यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस भी यूज कर रहे हैं, गूगल क्लाउड भी यूज कर रहे हैं, तो आपका मल्टी क्लाउड की केस में आ जाता है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में वीएम क्रिएट करते हैं, आप Good. स्टोरेज क्रिएट करते हैं, यू कैन मैनेज द नेटवर्क. These all are the services which are considered as a infrastructure as a services. Software as a services, the best example of software as a services, Active Directory, or you can say that load balancer, LB. These all are the example of SAS or Office 365. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात करें तो वेब ऐप,
Azure Web Application, and we have another options like as Azure SQL. These all are the examples related to the platform as a services. Is it okay about to understand about the Yeah, cloud computing? yeah, clear, sir. Okay, great. Next, another point is public cloud. The meaning of public cloud is basically related to AWS, Core Public, Azure, and GCP. GCP, Google Cloud Platform. ये आपके एग्जाम्पल हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं पब्लिक क्लाउड के. प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो IBM VMware क्लाउड, ठीक है. ये एग्जाम्पल है आपके प्राइवेट क्लाउड के लिए. हाइब्रिड इन द सेंस P2P, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट. जो पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा पब्लिक कंसीडर एज ए हाइब्रिड क्लाउड. और अगर मल्टी क्लाउड की बात करें, कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्लाउड. Multiple cloud in the sense you establish your services on AWS, Azure पे हमने भी सर्विस लगा रखी है, GCP as well. आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सर्विसेज को इन्वॉल्व कर रखा है which are considered as a multi cloud. Is that fine? Yeah, clear, sir. This is the basic concept of our cloud computing. So in तो hybrid, public to private, private public to public hybrid. hybrid public to private means combination of public to private. Okay, okay, sir. कुछ सर्विसेज आपने प्राइवेट से परचेज कर ली, कुछ सर्विसेज आपने पब्लिक से परचेज कर ली. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंसिडर एज ए पब्लिक हाइब्रिड क्लाउड. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड क्लाउड के नाम से जानते हैं. Okay, ठीक है, sir. Yeah, till here, clear, sir. ग्रेट. नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. Another important point, create Azure account. Azure account को create करने के लिए what you need to do, you just need to open URL Okay, portal.azure.com. दिस इज द यूआरएल. आप किसी भी ब्राउजर पे इस यूआरएल को टाइप करोगे एंड यूज मेल आईडी. कोई भी मेल आईडी इस्तेमाल करेंगे. इट में बी जीमेल या मेल हॉटमेल, कोई सी भी मेल आईडी इस्तेमाल करेंगे. वी नीड टू यूज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर हम इस्तेमाल करेंगे टू साइन अप आवर सेल्फ. नंबर थर्ड, फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन. फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन जिसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. okay, यू कैन आल्सो यूज योर ऑर्गेनाइजेशन आईडी. अगर आप ऑफिशियल आईडी इस्तेमाल करेंगे मेल आईडी तो उस केस में साइन अप कर सकते हैं. बट इशू क्या होता है ऑफिशियल मेल आईडी में, आपको एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं मिलता है. यू आर अनेबल टू यूज द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. yeah, yeah. ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करोगे और उसमें आप साइन अप कर लोगे. Okay, sir. Let's talk about the procedure to sign up ourselves over Azure portal. So as we discussed, we just need to provide the Azure, we need to open Azure portal और उसके बाद proceed करेंगे. Okay. Now, Oh, by
Azure subscription. It's really important for us. Okay. Azure portal पे सब्सक्रिप्शन हम कैसे खरीदते हैं and how many types of subscription are available. It is also important for us. We should know about कि कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन अपने पास Azure पे अवेलेबल है. Our responsibility to set up Azure Virtual Desktop, so you should know about the Azure subscription type. Okay. The Azure subscription, if we talk about the types, so categorized in various parts like as a free trial. Number two, uh, pay as you go. And number third, MSDN. ठीक है, ये तीन अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे इन रियल इन्वायरमेंट. इज दैट ओके? Yeah, clear, sir. फ्री ट्रायल विल प्रोवाइड यू, अब तो 15,000 समथिंग हो गया है, 15,000, या यू कैन कंसीडर एज ए $200 फॉर 30 days. अब प्रैक्टिस के लिए Azure will provide you $200 to purchase any Azure services. Azure की किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए आप $200 Azure will provide by self. Okay. Next, pay as you go. As per the name suggests, you have to pay as per usage. आप जितना यूज करेंगे ना, उस यूज के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना पड़ेगा. Okay. So this amount will MSDN, charge for MNC companies same, sir. The amount will be the same for corporate. एग्जैक्ट. हाँ, जितना आप यूज करेंगे, वो चाहे वो एमएनसी हो चाहे हमारा खुद का पर्सनल अकाउंट हो, दोनों के केस में हम सेम पेमेंट हमें देना पड़ेगा. Okay. Okay. Is that clear? Yeah, clear, sir. Okay, great. Talk about another option. MSDN क्या होता है? It is for MCT. ठीक है, MCT क्या होता है? Microsoft Certified Trainer. If you are a MCT, Microsoft Certified Trainer, Azure will assign you MSDN account. और इसमें क्या होता है? इसमें हम $100 पाते हैं एवरी मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट. टोटल इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की, मीन्स 12 months की. These all are the subscription. Without subscription, we are unable to perform any task. बिना सब्सक्रिप्शन के हम कोई भी एक्टिविटी Azure पोर्टल पे, चाहे वो हमारी VM क्रिएट करना हो, Azure Virtual Desktop क्रिएट करना हो, या और कोई सर्विस अगर हमें क्रिएट करनी है, तो we must need to set up our at least one subscription. ठीक है? Okay. Okay, sir. Clear, sir. Great. Let's proceed for the next step. Another important point जो हमें डिस्कस करना है, हाउ टू क्रिएट अ अकाउंट. अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा सा यहाँ पे अभी स्टेप हम देख लेते हैं. Like I'm going to open incognito wizard because I have already created my own account. And incognito wizard, we just need to open portal.azure.com. This is the URL. We need to create one account. We don't have account, तो create one पे जाएंगे. Type your mail account, तो Gmail account आप यूज कर सकते हो. Mhm.
Azure Live Class 1988 at gmail.com। आपको फुल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। Okay. साथ ही साथ इस जीमेल अकाउंट को हम लॉगिन भी करा लेते हैं, क्योंकि इट विल सेंड यू अ कोड। Okay. प्रोसीड टू नेक्स्ट। क्रिएट योर ओन पासवर्ड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पासवर्ड तैयार करना चाहते हैं। नेक्स्ट। एंटर द कोड। मेल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक कोड गया होगा। यू नीड टू Okay. वेरीफाई द कोड। दिस इज योर कोड 5860। आप इसको इंटर करेंगे 5860। 0. यहाँ पे कैप्चा इनका बहुत टफ होता है। अभी इन्होंने लास्ट Mm, 6 मंथ से ना कैप्चा इन्होंने बहुत mm. ज्यादा टफ कर दिया है, और अच्छा, 5 to 6 डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सम टाइम इट विल टेक मच टाइम, बट लेट्स okay. ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखो यहाँ पे, पिक वन Mm. स्क्वायर दैट शो टू Sh- Identical आइडेंटिकल objects. ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको स्क्वायर सेलेक्ट करना है, वन स्क्वायर सेलेक्ट करना है इन दोनों आइडेंटिकल, व्हाट वी कैन से दैट, ऑब्जेक्ट में से। तो इसमें बहुत ही केयरफुल तरीके से हमें देखना पड़ता है। Okay. अगेन स्क्वायर सेलेक्ट करना है। Fourth one, sir. Fourth. Second pick.
Actually, you need to fill up the captcha, और ये काफी ज़्यादा time लगेगा, so you can try it because I have already created my account, so Okay. I don't want to waste the time. Is it Okay, okay? sir. Yeah, तो okay, sir. ये कैप्चा के केस में आपको थोड़ा सा केयरफुल तरीके से काम करना है, ठीक है। और अगर Mm-hmm. ये टाइम आपको सेव करना है ना, तो बेटर ये रहेगा Mm-hmm. कि यू कैन क्रिएट अ आउटलुक अकाउंट, ठीक है। Okay. अगर आप जीमेल पे जाते हैं तो ये सारी सिक्योरिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, बट अगर आप आउटलुक पे जाते हैं, अगर आउटलुक की मेल आईडी से साइन अप करोगे ना, तो इतना ज्यादा टाइम Mm-hmm. नहीं लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी यूज कर रहे हो, राइट। Okay. I'm using my own portal to log in our Azure portal, ठीक है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं to sign in ourselves. This is the Azure portal look likes. ये हमारा जो Azure portal है, ये इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। Okay. जब आप साइन अप करोगे, जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो इट विल लुक लाइक दिस। मैं आपको अपना Okay. ऑफिशियल पोर्टल दिखा देता हूँ। वहां पे सब्सक्रिप्शन, जब आप साइन अप करोगे और सब्सक्रिप्शन कैसे परचेज करते हैं वो देख लेते हैं। Okay, sir. दिस इज माय ऑफिशियल पोर्टल, ऑफिशियल आईडी जिसको हम यूज करके लॉगिन किए हैं। लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो आप इनमें से कोई भी सर्विस परचेज नहीं कर सकते हैं। वीएम भी नहीं क्रिएट हो पाएगा, एडी भी नहीं तैयार हो पाएगा। ये आपको डायरेक्टली इस पेज पे ले जाएगा। तो इसके लिए आपको Okay. क्या करना है, एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना है जहां पे आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। पोर्टल के Okay. ऊपर वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन जनरल टैब। अंडर द जनरल टैब वी हैव ऑप्शन ऑफ सब्सक्रिप्शंस, क्लिक करेंगे। Subscriptions. अंडर द सब्सक्रिप्शन वी आर एबल टू फाइंड ऐड ऑप्शन। आप ऐड पे क्लिक करोगे टू परचेज वन सब्सक्रिप्शन, खरीदने के लिए यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं। इट विल चेक द एलिजिबिलिटी, मीन्स अगर आपका अकाउंट एलिजिबल है फ्री ट्रायल के लिए। वैसे स्टार्टिंग के अकाउंट में फ्री ट्रायल एलिजिबल रहता है, मैंने अपना फ्री ट्रायल ऑलरेडी यूज कर लिया है, इस वजह से पहला ऑप्शन जो है ग्रेड आउट दिखा रहा है, राइट। Yeah. ये हमें दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप स्टूडेंट अकाउंट पे जाइए, स्टूडेंट पासेस पे जाइए, या फिर आप पे एज यू गो पे जाइए। इन दोनों ऑप्शन के थ्रू ही हम अपना एज्योर पोर्टल पे साइन अप कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे सब्सक्रिप्शन। हाउ इट्स लुक लाइक, Initially, जस्ट नीड टू क्लिक देयर। या initially we need to select free subscription, right, sir? हाँ, because we don't want to pay any amount for testing purpose ना। Okay. Okay. सीखने के लिए हम फ्री ट्रायल अकाउंट पे ही जाएंगे, we don't want to waste any Okay. amount। Oh, yeah, yeah, sir. ठीक है, ये हमने साइन अप पे क्लिक किया, वी जस्ट नीड टू, ये पे एज यू गो हम टेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट ओनली वांटेड टू चेक how it's work, like how it work। I'm just going to proceed। OTP रिसीव होगा। ठीक है, नाउ वी आर एबल टू फाइंड एग्रीमेंट पेज। आप इस पे चेक मार्क करेंगे। Okay. नेक्स्ट, पैन की डिटेल, you must need to provide your PAN card, but do not put the original PAN card, ठीक है। इट्स नॉट Okay. मैंडेटरी कि आप Okay. ओरिजिनल पैन कार्ड इसमें फिलअप करें। Okay. देन पेमेंट की इंफॉर्मेशन, लाइक आई एम गोइंग टू यूज CLBP। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। वी मस्ट नीड प्रोवाइड द क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो फ्री ट्रायल के लिए ₹2 डिटेक्ट करेगा अकाउंट से, एंड
इट विल ऑथराइज यू टू एक्सेस द एज्यूर सर्विसेज। $200 हमें क्रेडिट करेगा। जब तक आप पे एज यू गो में नहीं जाते, इट विल नॉट चार्ज यू। अगर हम पे एज यू Okay. गो में जाएंगे तभी ये चार्ज करेगा। फ्री ट्रायल के केस में इट विल नॉट चार्ज एनी अमाउंट। इज दैट फाइन? Okay. Okay, sir. Yeah, clear, sir. ठीक है, so this is the step that we can use to sign up ourselves over a portal and purchase the services, purchase the free trial account। यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्री ट्रायल अकाउंट को परचेज करने का काम करेंगे। इज दैट फाइन नाउ? Yeah, clear, sir. ओके ग्रेट, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। यहाँ से हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड नाउ once you're ready with free trial account, we can proceed for the another step। फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने के बाद बैक टू योर Azure portal like this and the one of important point is identification। तो कभी भी किसी क्लाउड की अगर हम बात करते हैं ना, so cloud computing is not only for a particular task। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग is not provide only the storage services। Okay. ठीक है, cloud cloud Yes. computing will give us option to create a virtual machine, application services, right, storage account, multiple बहुत Okay. सारी services, thousands of 10,000, more than 10,000 of services are available। ठीक है ना, that Okay. help us to Yeah. create the virtual machines to manage the resources for organization के लिए Hmm. it will provide multiple options। Okay. Azure Virtual Desktop भी उस इन्हीं सर्विस में से एक पार्ट है, राइट। Azure Virtual Desktop भी Azure के पोर्टल पे एक सर्विस अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम अपना खुद का VDI सोल्यूशन स्टैब्लिश करेंगे। Okay. लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, बट VDI को सेटअप करने के लिए, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू manage the prerequisites। So this is our Azure portal and let me open another wizard। Sir, I need notes, sir, so that later I can हाँ, go through the. you must understood, you must need to use your document, so I'll share the document, no worry। Okay. कुछ Thank you, sir. Thank you so much. PPTs है, PPTs पे ध्यान देना, और PDF बुक है, और बट उसको आप देख लोगे ना स्टार्टिंग से, तो और Hmm. उसके बाद फिर क्लास में जो चीजें होंगी ना वो आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, Okay. Okay. Yeah. ठीक है, sir. चलो, दिस इज द पोर्टल और यहाँ पे आपको टाइप करना है Azure Virtual Desktop। अब AVD टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब AVD टाइप करने के बाद इट विल गिव अस अ डायरेक्टली ऑप्शन रिलेटेड टू द Azure Virtual Desktop। आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है Azure Virtual Desktop का। Yeah. I'm just going to click on Azure Virtual Desktop। It look like this। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट होस्ट पूल का ऑप्शन सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है। इट विल गिव अस अ क्रिएट होस्ट पूल, एप्लीकेशन ग्रुप, वर्कस्पेस, स्केलिंग, यूजर, इनसाइट्स, इनसाइट्स प्रीव्यू, वर्क बुक, these all are the options are available। ठीक है, ये अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल दैट हेल्प अस टू मैनेज द सर्विसेज। इज दैट फाइन? Yeah, clear, sir. बट यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए इसका थ्योरेटिकल में। अब जो Okay. होस्ट पूल होता है ना, लाइक जैसे हम यहाँ पे क्रिएट होस्ट पूल पे क्लिक कर देते हैं एंड whenever we click on create host pool it will provide lots of option। बेस से यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल।
द ऑप्शंस आर सब्सक्रिप्शन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, नेम देना है होस्ट पूल का, एंड लोकेशन डेस्कटॉप होस्ट पूल टाइप पर्सनल आर पूल्ड. Multiple options are available according to the usage you can create. But Okay. to set up our host pool, उसके पहले हमें बहुत सारी सर्विसेज सेटअप करने की रिक्वायरमेंट होगी. Okay. होस्ट पूल Okay. क्रिएट करने के पहले हमें कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? Yeah, clear, sir. Fine. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू, पहले ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको समझ लेते हैं. लाइक रिसोर्स ग्रुप क्या है, एंड वीनेट कैसे हम तैयार करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम इम्प्लीमेंट करें तो वो सारी चीजें समझ में आ जाए. Okay. It's really important for us. We must need to know about the concept of resource group. Okay, sir. Okay. So resource group क्या है? Let me guide you about the concept of resource group. What about subscription? I hope you understand about the subscription. Is it okay? Yeah, clear, sir. As you resource group. Okay. In case of Azure Resource Group, what are the just need to know about the concept कि Azure Resource Group है क्या? Um, like this is our Azure portal. Using single Azure portal, you are providing services to multiple client. ठीक है? आप एक single resource group की help से, single Azure portal की help से आप multiple client को technical support provide करना चाहते हैं. Okay. You are responsible to provide services to HCL. ठीक है? आप IBM को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डेल एज वेल. Okay. ये तीन कंपनी हैं जिनको आप एजूर पोर्टल के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, yeah, got it, sir. सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो क्लाइंट है हमारा, HCL हमारे लिए क्लाइंट Mm. है, IBM हमारा एक क्लाइंट है, डेल हमारे लिए Dell. एक क्लाइंट है, Okay. एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने क्लाइंट की जो सर्विसेज है या क्लाइंट के जो रिसोर्सेज है ना, उनको Mm-hmm. सेपरेट रखें, आपस में मैच ना होने दें. ठीक है? इनको हम Okay. सेपरेट रखें, आपस में मैच ना होने दें, ताकि हम अपने जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट हो, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, उसको आसानी से फुलफिल कर सकें. इज दैट करेक्ट? Yeah. Yes, sir. Clear, sir. ठीक है. अब रिसोर्स ग्रुप की अगर हम बात करें, तो रिसोर्स ग्रुप में इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर्स. आप इसको क्या बोल सकते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर. Containers. कंटेनर्स क्या करता है? जैसे HCL ने रिक्वेस्ट की आपसे कि आप मुझे एक VM प्रोवाइड कर दो, एक हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर दो 100 GB का. ठीक है? Oh, ये रिक्वेस्ट HCL ने हमसे रिक्वेस्ट की है. ठीक है? okay. IBM ने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ना VPN का सेटअप दे दो, एज्योर पोर्टल से, एक ही पोर्टल से. एंड डेल ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्रोवाइड मी द SQL सर्वर. डेल रिक्वेस्टेड Okay. टू प्रोवाइड मी SQL सर्वर. अब तीनों अलग अलग कंपनी और तीनों की अलग अलग डिमांड. ठीक है? तीनों की अलग अलग Yeah. तीनों ऑर्गेनाइजेशन अलग है, और तीनों की रिक्वेस्ट अलग है, और आप अकेले हो जो रूट अकाउंट हैंडल कर रहे हो. दिस इज Okay. आवर रूट अकाउंट. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी सर्विसेज को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज करें. इज दैट करेक्ट? Yeah. Yes, sir. Correct. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि वी मस्ट नीड टू
put our resources, we must need to put our resources in different resource group ताकि आपको आसानी हो समझने में. Okay. ठीक है, that you need to understand about the कि क्या requirement है clients की और उनको आप आसानी से मैनेज कर सके. Is that fine? Okay. Yeah. Clear, sir. Great. So we will create our own resource group और उस रिसोर्स ग्रुप में हम अपनी सर्विसेज को हैंडल करने का काम करेंगे. उस रिसोर्स ग्रुप में हम सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेंगे. आगे. You're clear, sir. Till here. ग्रेट. नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स ग्रुप. सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रिसोर्स ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट्स. अनदर पॉइंट्स आर कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं. Azure networking, which is really important. Azure networking. Networking. So just wanted to know about what you think about the networking. नॉर्मल नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, नॉट एजूर नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग में क्या क्या चीजें आती हैं. Mm, Connection between two users. It would be internet or any access like that. दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग. Uh-huh. दो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को हम नेटवर्किंग के नाम से अब नेटवर्किंग बोल सकते हैं. बट इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट द टूल्स. कौन कौन से टूल्स या सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं नेटवर्किंग के केस में. जब आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो क्या क्या Yes. कंपोनेंट्स हमें मालूम होने चाहिए. Okay. द कंपोनेंट्स आर ठीक है ना. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. एक तो हमें पता होना चाहिए आईपी एड्रेस. बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज आईपी एड्रेस. अबाउट द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट. ठीक है, ये हमें मालूम होना Yeah. चाहिए. एंड यू शुड नो अबाउट द पब्लिक एंड Private. प्राइवेट Private. आईपी एड्रेस. पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, रेंज इनकी मालूम होनी चाहिए. एंड व्हाट अबाउट सबनेट. सबनेटिंग आपको आती है. व्हाट इज सबनेट, क्या होता है सबनेटिंग. No, no, no idea, sir. ठीक है, थोड़ा सा हमें कंफर्म होना चाहिए कि सबनेटिंग क्या है. Sir, in Azure, there is any possibility of hacking the company data, organization data, नो, confidential data like that. माइक्रोसॉफ्ट एस एल ए, माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, अगर उनके एस एल ए की बात करें, हमारा जो डेटा है ना, Yes, sir. वो अप टू 99.9% तक प्रोटेक्टेड है. Okay. ठीक है, एज पर द माइक्रोसॉफ्ट वो 99.9 तक परसेंटेज तक सब प्रोटेक्टेड Yeah. है. Why? So why? Because here we need to use a network, right, sir? Any if suppose any subscription, any subscriber or any employee will work from anywhere where if that person is available in the home, he or she can use his own network. In public places, they're used to connect with the public Wi-Fi's and routers like that, sir. So in that scenario, there is a possibility.
या बट Azure establish multiple resources, ठीक है ना, Azure establish multiple resources for the security purpose. Okay. बैकएंड में फायरवॉल, चेक पॉइंट, ये सारी चीजें बैकएंड में Azure ने स्टैब्लिश कर रखी है टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी. Okay. Okay, sir. Yeah, clear, sir. लेट्स प्रोसीड. ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द आईपी एड्रेसिंग, क्योंकि इसके बाद हम वीनेट को इस्टेब्लिश करेंगे. अबाउट Okay. आईपी एड्रेस. ठीक है, तो अबाउट आईपी एड्रेस में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. एक तो हमारे पास क्लासेस है. नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है. दूसरा, यू शुड नो अबाउट द रेंज. तीसरा, यूसेज. और चौथा है सबनेट, डिफॉल्ट सबनेट. वी शुड नो अबाउट दीज पॉइंट्स. क्लास की बात करें तो क्लास ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है, ये अपने पास आईपी Yeah. एड्रेस की रेंज हो गई. Okay. रेंज की बात करें तो यहाँ पे 0 to 126 ये रेंज हो गई क्लास ए की. 128 to 191 ये क्लास बी की रेंज हो गई. Okay. 192 to 223 ये क्लास सी की रेंज हो गई. 224 to Four. 239 ये क्लास डी की रेंज हो गई. और Hmm. लास्ट अगर हम बात करें 240 Forty to two. 254 ये क्लास ए की रेंज हो गई. Okay. Okay, sir. ठीक है, ये अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट. Yeah. Okay, sir. यूसेज की बात करें तो क्लास ए, बी एंड सी, ठीक है, ये तीनों क्लास हम अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए लगाते हैं टू यूज फॉर नेटवर्किंग. ठीक है, Yeah. लोकल ऑफिस हो गया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हम ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं. Yes. एंड लेट्स टॉक अबाउट टी क्लास. टी क्लास क्या होता है. इट्स बेसिकली यूज फॉर द D class is used for the multicasting, and number E class is basically used for the purpose of research and development, R&D, और इसको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं. Okay. मतलब इन दोनों आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हम नेटवर्किंग में नहीं करते हैं अभी. वी आर एबल टू यूज ओनली ए Hmm. क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास. इन तीनों क्लासेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर. Okay. Yeah. Clear, sir.
Sir, here we can use ABC as a multi uh, casting and down DNC or network like that we can use, sir. Is alternately is there possibility? We can use it. We can use it, but basically it is used for the only commercial purpose. Multicasting के लिए E class already mention है. Okay, okay, sir. Clear. Yeah, clear, sir. Clear. Okay, wait. Next, डिफॉल्ट सबनेट की बात करें तो वी हैव अ 255 ए क्लास के लिए 255.0.0.0, बी क्लास के लिए 255.255.20.0 और सी क्लास के लिए 255.255.255.0. ठीक है, ये It आपका is looking like डिफॉल्ट. IP address. सॉरी These सॉरी, numbers are कैन look. प्लीज. These numbers are looking like IP address. हाँ, दिस इज द सबनेट मास्क बेसिकली, उसी आईपी एड्रेस से ये हाईलाइट हुआ सबनेट मास्क. वी कैन से दैट इट्स अ सबनेट मास्क. Subnet. यस. Yeah, you got it, sir. वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कैसे इस आईपी एड्रेस को मैनेज करते हैं. ठीक है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. The another step to understand about the range of private and public IP address. Okay. It's our responsibility. We should know about the range of public and private IP address. Like as you can say that range of private IP address. तो रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस में तीन क्लासेस हैं अपने पास. एक ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है. हम इन्हीं तीनों क्लासेस के आईपी एड्रेस को यूटिलाइज कर पाते हैं फॉर द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग. मीन्स अगर आपको ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क सेटअप करना है तो ये तीन क्लासेस हम इस्तेमाल करते हैं. ए क्लास Mm. स्टार्टेड फ्रॉम 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255. ठीक है, यहाँ पे ये रेंज हो गई क्लास ए की. बी क्लास की रेंज की बात करें तो ये 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255. और सी क्लास की बात करें तो 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255. This is the range for our class C. Is that clear? Yeah, clear, sir. So these numbers are you randomly taking or this is a standard numbers? No, no, this is the standard number provided by Azure, provided by INA, AINA. INA is a Okay. firm worldwide which is responsible to provide the IP address. वर्ल्ड में Okay. कोई भी Okay. डिवाइस आईपी एड्रेस को असाइन होती है, आईपी एड्रेस उसको मिलती है, तो
आईना शुड नो अबाउट कि किसको क्या आईपी एड्रेस मिल रही है ताकि हम उनको ट्रेस कर सकें. हम्म. Okay. Clear, sir. Got it. Great. So let's take 5 minute time, go through the topics that we completed, and let me know if you have any question. Yeah, sure, sir. बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो हमने ये सभी पार्ट कवर किए हैं, राइट. Yes, sir. हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिस्कस किया अभी. वी डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन. और अभी हम इस वाले पॉइंट पे हैं, राइट. Yeah, वर्चुअल yes. We नेटवर्किंग देख रहे हैं. virtual networking. Yes. Sir, is the Citrix is a part of Azure or something? This is a different concept. सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन. In the second one, Citrix is a part of Azure. It's a different technology. No, no, no. Citrix is the on-premises setup. Okay. Citrix जो है ना on-premises setup को हैंडल करता है. Okay. Yeah, clear, sir. ग्रेट. एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद कनेक्ट करें. Yeah, sure, sir. Okay, let's take 10-minute break and connect again. Yeah, sure, sir. Yeah. This conference will now be recorded. ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अबाउट नेटवर्किंग या आईपी एड्रेस वगैरह क्या है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज. यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है 10 ए क्लास के लिए, 172 बी क्लास के लिए एंड 192 सी क्लास के लिए. इसके अलावा जितनी भी आईपी एड्रेस आपकी स्टार्ट होगी ना, चाहे वो 100 से स्टार्ट हो, 110 12 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, ठीक है ना, या 1 से स्टार्ट Hmm. हो, इसके अलावा जितनी भी आईपी एड्रेस है वो आपकी क्या कहलाएगी? पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाएगी. Sure. These are all the comes under the पब्लिक. public. हाँ. Okay. प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, ये किसके थ्रू प्रोवाइड होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड अस. Okay. We are not authorized to configure public IP address directly by self. हम केवल ऑथराइज हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए. या तो आप 10 की सीरीज उठाएंगे, ए क्लास या बी क्लास या सी क्लास या 172 की या 192 की. ये तीन Okay. क्लासेस हैं जिनको हम आईपी एड्रेस में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट. अब बैक आ जाते हैं, थोड़ा सा वीनेट के बारे में बात कर लेते हैं. ये तो आईपी एड्रेसिंग हो गई. अब वीनेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है. Why we need to configure Hmm. Yes. virtual network? Azure Virtual Network, which is considered as a VNet. अब VNet क्या होता है? जैसे अपने ऑन प्रोमाइसेस में अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमने दो पार्ट कैटेगराइज कर लिया. दिस इज अवर ऑन प्रेम सेटअप. ऑन प्रेम मतलब लोकल सेटअप, ठीक है. Okay. Okay, sir. और वी हैव अ एज्योर सेटअप. ठीक है. ऑन प्रेम सेटअप के केस में अगर आपके पास कुछ कंप्यूटर हैं, फिजिकल मशीन्स हैं,
ठीक है, ये आपने स्विच लगाया। ठीक है, ये हम PC1 हो गया, PC2 हो गया, PC3 हो गया, ठीक है, या PC4। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। केबल के थ्रू यहाँ पे ऐड है, ये कनेक्टेड विद लैन केबल। और ये स्विच है अपने पास, फिजिकल स्विच है। एंड वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन, हम आपस में क्या कर सकते हैं, इसके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? Yeah. Yes, sir. ठीक है। एंड नाउ if we talk about the Azure setup, तो Azure पे तो कोई भी हार्डवेयर तो है नहीं, we don't have any hardware, बट Azure पे भी हम VMs क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट? Azure पे भी हम वर्चुअल Yeah. मशीन को Yes. क्रिएट कर सकते Virtual machine. हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको कैसे कम्युनिकेट किया जाए, आपस में इनको कैसे जोड़ा जाए। तो देन VNet come into the picture। VNet क्या है? एक सर्विस है, इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस। Okay. VNet will give us option to create a subnets। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं, and using subnet we are able to connect like this। ठीक है, ये अपने पास VMs हो गए। ये VM आपके, वी डोंट हैव केबल, वी डोंट हैव अ स्विच, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये लॉजिकली कनेक्टेड है, क्योंकि ये Azure सेटअप है, तो इट्स अ टाइप ऑफ लॉजिकल सर्विस। ठीक है, ये क्या अपने पास लॉजिकल सर्विस है, जिसके थ्रू हम अपने कनेक्टिविटी को फाइनल करते हैं। डन। Okay. Done, sir. Azure VNet कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट। अगर हम VNet की बात करें तो Azure VNet जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वन इज डिफॉल्ट VNet, and second one is create our own VNet। Default VNet is started from 10.0.0.0 Okay. /16। और क्रिएट VNet में क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग से इसमें VNet को सेटअप कर सकते हैं। 192 की आईपी अगर आपको उठानी है तो 192 की, 172 की आईपी आपको उठानी है तो 172 की, अब कोई से भी आईपी एड्रेस या 10.10.10. समथिंग की आईपी एड्रेस उठानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ठीक Okay. है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा सबनेटिंग। तो मैं आज क्या करता हूँ, आपको एक रिकॉर्डिंग भेजता हूँ वीडियो की, Yeah. आप वो देख Okay. लेना, इसमें आपको सबनेटिंग का आइडिया लग जाएगा। प्लस इस क्लास की मैं आपको रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. आई शेयर द डॉक्यूमेंट, तो आप थोड़ा सा तैयारी कर लेना ताकि चीजें समझ में आए। ठीक है, Oh, okay, sir. चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट AVD। Okay, sir. ओके, थैंक यू, Yeah. Bye, bye, sir. बाय बाय।